Typical ready. All right, 3, 2, 1, camera action. तुषार थोड़ा स्माइल तो कर ले यार, नौकरी वोकरी लग चुकी है तेरी. ठीक है, I think we are live. All right, hi everyone, welcome on board. Let's get the party started. Today's session is really, really important. And this is बहुत ही दिल से. We are all at our homes. मैं भी अपने घर पे आया हुआ हूँ और ये भी अपने second homes के अंदर है. This session is from SPJain Bombay, the hostel of SPJain Bombay. I am Calcutta, the hostel of IIM Calcutta, and I am Ahmedabad, the hostel of IIM Ahmedabad. And Calcutta वाले आज double present है यहाँ पे. और अविनाश जी, जो अविनाश तू भी कैंपस पे है क्या? Yes, sir. Very much in campus. We क्या can't go out. You can't go. बहुत ही बढ़िया भाई. 20 days to cat, boys and girls. This session is going to be really, really amazing. It's going to be like a slow podcast. इनसे इनकी जर्नी डिस्कस करेंगे. और भाई तुम लोग सारे रोल मॉडल हो अभी. ये आई थिंक 100+ people have joined us. पहले तुषार इनको वो लाइक कर दे यार. तू तो फेमस हो चुका है. तू तो पहले भी आ चुका है सेशन के अंदर. लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में डालते रहो. लास्ट में सर क्वेश्चन ले लेंगे फिर. Great यार, great. Superb, great. तो भाई 170 people are live right now. Again, this is very, very important. भाई जो तुम लोग सुन रहे हो ना, कि लोग ये भी मैनिफेस्ट करते थे कि we got to be on that side of the table, तो manifest whatever shit you want to do and bloody get this exam cracking. पूरे आज 19-20 दिन रह गए and let's start with their introduction और उनके साथ पूरा इनका स्ट्रेटजी सुन के जाएंगे. डी डे पे इनके साथ क्या अच्छा हुआ क्या बुरा. अविनाश तो यूपीएससी वाला है भाई, इसकी अलग ही स्टोरी है. और एडी तो पहले मास्टर्स करके डबल मास्टर्स कर रहा है. और तुषार का कोई एनआईटी नहीं है, कोई आईआईटी नहीं है. और इन सब की स्टोरी और नौकरियां वगैरह लग बता दूं क्या? नहीं है, हम तो नहीं बता. नहीं. नौकरियों के बारे में बताना अलाउड. अच्छा, जिनकी एसआईपी हो चुकी है ना, वैसे वो इतना तो बता दो यार. Yes, sir. हो गया सर. हो तो हो गई 100%. और तेरी तो चलो ठीक है, वो नहीं बताना है. इनमें से एक कॉलेज की आज ही खत्म हुई गरम. अब तुम उसकी स्माइल देख के बता सकते हो. ठीक है भाई, लेट्स गो. देवराज, लेट्स गो. देवराज जॉइनिंग इन फ्रॉम माय स्कूल एसपीजेन बॉम्बे. इसको मैंने बैंगलोर एयरपोर्ट पे पकड़ा था. अगर आपने मेरी स्टोरी देख रहा है, तेरी फोटो दिखाई मैंने सबको. एंड आज आपको ग्रीट करने के लिए दिखाया. देवराज, फटाफट स्मॉल इंट्रोडक्शन, लेट्स गो. Okay, so I'm currently doing operations in SPJain, Institute of Management and Research. So इससे पहले I was working with Adani Poach and SEZ for 2 years, and in CAT I got 99.27 percentile. And yeah, it has been a very great journey the past 1 year, and yeah, really an exciting time to get into MBA. तेरा परसेंटाइल गलत लिखा हुआ है, 9.27 लिखा हुआ है. 99.27 होना चाहिए. ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मेरी गलती. ऑलराइट, ग्रेट भाई. जॉइनिंग इन फ्रॉम एसपीजेन बॉम्बे फैमिली. ए तुषार, द सेलिब्रिटी ऑलरेडी बिफोर. बताओ भाई तुषार, क्विक इंट्रोडक्शन. Yes, sir. So last year I attempted CAT. I got 99.80. Last few months in IIM Calcutta, I realized chill तो नहीं है अंदर भी. मेहनत बहुत है, but it is worth everything that you are giving. तो अभी का part will take you ahead. That's it. बड़ा हो गया वैसे तू. अभी सर दाढ़ी उगाने दिया गया है. अब भाई तुम्हारी दाढ़ी वाड़ी सब कट जाएगी भाई. बहुत ही बड़ी. ये लड़का मेरे दिल के बहुत क्लोज है. नॉन इंजीनियर, नो एनआईटी, नो आईआईटी. केजसुमा है राइट, इफ आई रिमेंबर. इसकी मॉम से ही बात हुई थी when she was there, and 1 year back when you got percentile, when you converted 6 months back, you were on this side of the table, and again now from college is joining us. Great yaar. Tushar, welcome on board. Adi, go ahead. Sure. I'm Aditya Sahu. I have a BS and MS from IIC Bangalore, majoring in physics. And then I decided to go for a career switch. Lots of motivations, will cover that in the story. And so my first attempt last year wasn't really hopeful or anything. I just had a lot of dreams and all. Ended up with 99.92. I was really, that was really great for me. And then dream B school, IIM Ahmedabad, here I am. क्या बात है. सो अमेजिंग. अविनाश की स्टोरी बहुत अमेजिंग है. अविनाश भाई, जो लोग लेट जुड़े हैं, हम शुरू करने वाले 20 days to CAT. पहले इन सबको जान लो, इन सब की बैकग्राउंड देख लो. तुम्हारा इंस्पिरेशन इनमें से कोई भी एक पकड़ लो, उसको लेके देन टेक इट टू द मून एज वेल, एंड मजे करेंगे. चल भाई बताइए. Yes. So just like Sahu said, he has a very interesting career switch. मेरे साथ ये 2 बार हुआ. So I was a Defense Academy cadet in the Air Force, and from there I decided, no, I will do something. I did engineering. उसके बाद I was doing UPSC, and my friend was writing CAT. He got into IIM Bangalore. I helped him, but never thought of writing CAT myself. Later, then in the end, I decided somehow, and that is when I got to know Sumit sir also. You might remember, sir, our conversations back in the day, whether I was discussing whether I can do it. Am I made for this? And you gave me the confidence. So always grateful for that, sir. And
So now here I am, just echoing what Tushar said. IIM Calcutta, it is touted to be IIM chill, but this is the biggest lie of our generation. There is Exactly. nothing chill about IIM Calcutta. So yes, but in the end, everything worked out, and CAT went well, and that is the story we are here. Superb, yaar. Superb. Great. Let's get started. So, Dev, tera kitna work ex tha? How much work has he got? So I had 2 years of work ex. So Tera 2 my years. story, yeah, my story is like I was in a very remote location. So I think many of the viewers could relate to that. Ki when you're working in a very remote location, you don't have access to basic necessities, and then you have to prepare from there. So I just decided to quit my job at that stage, and then 6 months I started to prepare, and yeah, and then I cracked CAT. Then again 6 months I prepared for interviews. So it was a 1 year gap. So still it was fine because I did well, so it's okay. At the end, it बहुत pans out. बहुत ही बढ़िया. श्रेयसी भी जुड़ी है. श्रेयसी अपनी स्टूडेंट थी यार. ये कैल में है क्या? श्रेयसी सरकार. Yes. अरे क्या अविनाश तेरे को याद कर रही है. क्या बात है, क्या बात है. नैश दिख रही है. नैश आई थिंक तो ही है. क्या बात है. गुड गुड ग्रेट. तुषार, तेरा नाम नैश Yes, चला sir. क्या? आई एम कैल में. मेरा नाम ये स्नैच Avinash, होगा. Avinash is अविनाश का next. नैश. ओ माय Avinash, गॉड. sir. हे श्रेयसी, गुड थिंग. श्रेयसी तू भी आजा लॉग इन कर ले भाई. ठीक है. वो चैट कर रही हूँ. हाँ तुषार. Yes. Yes, sir. So I don't have any work experience, and my story is that I did not sit for placements. I doubled down. मेरा startup था. My startup did not pan out. I was with my friend on that startup. It did not pan out, and I did not want to go for the coding jobs after my computer science engineering. So instead of that, I doubled down, and that is basically how everything happened. I just put all my eggs in one basket, and I ensured that I'll have to make it through. I don't have anything to land on otherwise. क्या बात है, क्या बात है. ग्रेट यार. एडी, तेरा क्या सीन था? कितना वर्क एक्स? Fresher, like fresh out of college. So basically, my final year masters में I wanted to go for a research career after PhD के लिए apply करने वाला था, but that last year was extremely. I started doubting a lot of things and started lacking motivation and such. Where CAT was my sort of outing and a new prospect. Ki I wanted to explore how the industry works, and I felt MBA would give me that perspective. So then it was pretty late when I applied for CAT and started prepping for it. So, that was my story. चलो भैया, बहुत ही बढ़िया. चलो ज्ञान बांटो पहले फटाफट. अभी रह गए हैं भाई कुछ ही दिन, और 20 दिन रह गए. इनफैक्ट क्या क्या करना चाहिए? हु वांट्स टू गो फर्स्ट? लेट्स गो सेक्शन बाय सेक्शन. वर्बल एबिलिटी भाई बताइए. और मेरा कुछ ज्ञान दिया काम वाम आया कि नहीं? द डैशबोर्ड एंड द जीडीपी और मॉक्स और Sir, व्हाटएवर. वर्बल एबिलिटी जी. का मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ बोल. ए ऑन एसेस को तो आपने ही इंट्रोड्यूस करवाया था मेरे को, एंड दैट वाज द गेम चेंजर फॉर मी बिकॉज देयर इज नो कांस्टेंट सोर्स ऑफ गुड लिटरेचर अवेलेबल, एंड things to start repeating when you read a lot of passages, so you will realize कि okay, this is repeating. So the Aeon SS part like helped me a lot to improve my verbal ability. अभी लास्ट 15-20 दिन में कुछ हेल्प होगा? ऑन वेन पढ़ते जाएं, मतलब लास्ट दिन तक कुछ ना कुछ विल इट बी हेल्पफुल? Yes, sir. Actually, I believe that that reading habit should be developed. It should not matter कि अब क्या है. मतलब आप just you have to keep reading in MBA also. That's a common fact. So, but before a few days, 2-3 days, you can just tone it down because you need to keep your mind free. This is what worked for me. Anyone else could add anything if they want. सुपर ग्रेट. वर्बल एबिलिटी. हाँ भाई, वर्बल. Sir, I would like to add something. Regarding just like you asked, what should be done now at this point? There is no point in trying to develop your English skills or language skills more than what you have already. It's better to just practice what you have and be very confident. So just like Debraj said, if you keep on reading, you will be confident on the day of the exam. Not that you will learn anything new or try to develop your vocabulary. The time for that is not now. You will do good with what you have. That confidence you need to have. So that is how VRC should be approached. That's great. Eddie. You should keep on reading. I mean, that is the mocks and all. They're just part of the process. And for VRC, it's all about reading. As Avinash mentioned, Right. vocabulary is not something you develop overnight. So be confident. I mean, confidence is key. This is all. So VRC is mostly like out of 4 options, you'll be confused between 2 options. Correct. So the only way to answer the question is to think from the author's perspective. That is precisely what we need to do. We need to think how the author has framed the passage and what exactly they want to convey through the passage.
So yeah, that's my Yeah, piece on and this. one of the best source could be the old passages, like pick up old question papers and stuff. Right. And for the last 10, 20 days, that's going to be helpful. Tushar, you want to add something? Yes, sir. So, firstly, as Debraj mentioned, something else worked for me. So, I kept reading Aeon, and even half an hour before the exam, everyone was just chilling and looking at something else. But I just wanted to get a head start. I just wanted to warm my mind up. So, in the morning at around 6:30 or 7, I started reading an Aeon article. My anxiety went away, and I started to get into the flow because I thought that having something and it will also help me get away from the reality at that moment. And True. the second point that I would like to add here is that giving the mocks are sacrosanct right now, if I may use the word. Then the second thing is old passages, as you mentioned. So that is something. Looking for trends is the best thing that you can do to solve the dilemma that Aditya just mentioned. The dilemma between choosing the right option between the two options. So Super. looking at the past papers will help you identify those trends, how they are feeling, how you can choose the one. बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही बोर हो गया मैं तुम्हारी बातों से। अब मुझे कोई अच्छी अब मुझे कोई अच्छी बातें बताओ। नौकरी वोकरी लग चुकी है यार? पहले ये बताओ, ये अहमदाबाद, कैलकटा, ये एसपीजेन बॉम्बे, भाई ये एवरेज पैकेजेस तुम दिखा रहे हो, मतलब मीडियन 1.5 लाख पर मंथ, मतलब लोगों का 3-3 लाख रुपए का इंटर्नशिप लग रही है। वो सच है क्या? मतलब ट्रू है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सच्ची, पब्लिश्ड। देवराज, एसपीजेन का भी ये हाल है? Yes, sir. यहाँ पे it's like the situation is really good. The place where I worked in, that was also a very professional organization, and बता my दूं मेरी कंपनी? no, but I interned in an FMCG company, a very big brand, an FMCG company in a very nice program, and I had a great experience. ये So बहुत I खराब है, नाम नहीं बताएंगे। वेरी नाइस, बहुत ग्रेट एफएमसीजी। पूरा बताना तो पूरा, या तो मत बता। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। वन ऑफ द ड्रीम स्कूल्स एज वेल, वन ऑफ द ड्रीम कंपनीज एज वेल। सुपर्ब यार, सुपर्ब, गुड। और तेरा क्या हाल है भाई अविनाश? तेरी भी नौकरी लग गई? एसआईपी हो गया? Yes, sir. हाँ? I am also working in a very fantastic company. Very happy about that. But क्या? regarding the numbers you said, sir, the guy living next to my room or the room next to that got a figure so unreal, even higher than what you just said. So yes, that is what's happening here. Some people are earning in lakhs, Yeah, I was at Exilrai Jamshedpur the time I met Debraj at the airport in Bangalore. So I met the placement guy there, Kanak Raj sir, amazing guy. So few guys have got 7 lakhs ka internship for 2 months. And I was like, what? What's happening? Yeah. What's happening? क्या बात है? अच्छा, पुलकित प्रकाश ने मैसेज कर दिया है, ITC प्रोफाइल कैन बी फाउंड ऑन लिंक्डइन। बच्चे स्मार्ट है भाई, बच्चे स्मार्ट है। yeah, ठीक, really, they're really smart. they're really smart। तुमने भी पूरा नाम लिखा है तो गूगल मान ले। गुड यार। चलो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट 20 days to कैट भाई। अच्छा, बिफोर दैट भाई स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए 375। मैं इनकी पढ़ाई वाली बोरिंग चैट को बीच में इंटरेस्टिंग करता रहूंगा। गर्लफ्रेंड मिली है, इनको नहीं मिली है, वो सब बातें भी करता रहूंगा। बट लेट्स टू मूव टू द सेकंड सेक्शन, DILR। तुम्हें से DILR किसी का 99.99 या 99.97, 96, 95? एनीवन? 99? हाँ। BRC में तो था सर, DILR में नहीं है। BRC में कितना था? 99.98। Oh man, fancy, good। सर लेकिन मतलब मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव है कि मेरा स्टोरी अबाउट DLR बोलने लायक है, नॉट बिकॉज ऑफ द परसेंटाइल, बट बिकॉज मैं उसमें बहुत ही ज्यादा वीक था। अच्छा। I gave it my everything to just clear the 85 percentile का कट ऑफ। I अच्छा। gave it my level best, and for that I practiced a lot from very different sources, ठीक है, but the thing is my natural ability of logical reasoning is not that strong. So in the exam, but still that helped. All that practice helped. That helps you structure a particular problem. So for that you need to practice many different like sources. बहुत सारे कि sources कर लो, पुराने पेपर yeah, कर लो, अपने मॉक के क्वेश्चन कर लो, जो भी किताब है, अरुण शर्मा yes. जो भी कोचिंग लगाई है वो पकड़ के अलग अलग सोर्सेज करो। मैं अगर तुम्हारे टाइम पे याद हो, मैं बोलता था 2 LR करो, 2 RC करो, 2 DI, याद है? You guys remember that? तो ये बोलता रहता हूँ मैं इनको, 2 मतलब विभिन्न करते रहे तो भाई बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, नेवरदलेस। तो DLR में यार मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? तुषार, तेरा कितना था DLR? सर मेरा DILR का स्टोरी कुछ सिमिलर है। मुझे लास्ट 20 दिन के अंदर ही एक बार तो 0 मिला था, पूरा शून्य के साथ था अच्छा, मैं एक बार। रियल कैट बट मार्क्स में सरप्राइज, यस सर, नंबर है, मैं चेक कर लूंगा, मैं लॉग इन करके। देख लीजिए सर एकदम। मैं तो रखा था सर, शायद 21st मॉक था, मुझे याद है। Wow, zero, like around a month in advance. यस आई डिड नॉट सॉल्व एनीथिंग पेपर में। मैं बैठा था क्या करूं सोच के, बट
surprisingly, I scored my highest 99.55 in DINR in the actual paper. तो सर Wow. उतना बोल सकता हूँ कि मेरे पास भी एबिलिटी तो नहीं था, बट बेसिकली प्रैक्टिस एंड आपने जो बोला डैशबोर्ड का जो कंटेंट है, जस्ट गोइंग ओवर दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो इफ समवन इज डिलिजेंट एनफ तो दे विल गेट थ्रू. दो ही चीज है करने के लिए, डैशबोर्ड में जो है कर लो, एंड जो पास्ट ईयर पेपर से रियल कैट मॉक से कर लो, और कुछ है नहीं. या ग्रेट या ग्रेट. तो जो जो भी पढ़ना है अभी अपने मॉक से ही पढ़ना है और अलग अलग सेट बनाते जाना है. हाउ अबाउट द सिलेक्शन? यू आई एम श्योर यू गाइस हैव क्रैक्ड इट. हाउ आर यू एबल टू फाइंड दैट इजियर सेक्शन, इजियर क्वेश्चन? क्योंकि ये बहुत बड़ी विडंबना होती है कि इजियर सेट मिल जाए मेरे को. आईडी तू अहमदाबाद पहुंचा 99.2 पे, क्या सीन है भाई? तेरा स्कोर 99.92 है भाई, सबसे 9 ज्यादा. हाँ बता भाई, तू बता. तो हाँ, मेरा DLR इज लाइक दैट वाज द सेक्शन आई वाज मोस्ट कॉन्फिडेंट इन. ठीक है, मतलब NTSC वगैरह क्रैक करा था तो उस टाइम से सॉर्ट ऑफ था कि DLR तो कर ही लेंगे. एंड आई वाज प्रेटी चिल्ड आउट एंड ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा था उस वक्त. बट एग्जाम में क्या हुआ ना, एग्जाम में आई वाज लाइक चलो 2 सेक्शन तो निकाल लेंगे, तीसरा सेक्शन पे देखेंगे फिर. बट दूसरे सेक्शन में ही मेरा वो टेबल बनाना होता है ना हर एक क्वेश्चन का. तो टेबल का एक फिगर, एक नंबर बस गलत आ रहा था, उससे एंटायर क्वेश्चन पांचों के पांचों सॉल्व नहीं हो रहे थे. एंड देन आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट. एंड देन आखिरी के 30 सेकंड बचे थे, 30 seconds, एंड आई गॉट द नंबर राइट. एंड 5 में से मैं 4 क्वेश्चन करके आ गया. तो दैट वाज लाइक, अगर वो नहीं होता देन दैट वुड हैव मेड द वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस. या अहमदाबाद से अमृतसर होता, लिखा ये यही होता. एग्जैक्टली. या रोज भाई इधर ये तराज जो सर ला रहे हो बेचारे को. इस पे एक स्ट्रेटेजी जो कि मैंने यूज किया ताकि मैंने कट ऑफ क्लियर कर सकूं वाज दैट हाँ. कि इन्वेस्ट लाइक 4 minutes टू रीड इट आराम से, देन ट्राई इट. अगर इफ यू नॉट मेकिंग एनी हेडवे देन यू हैव टू सी द होल पेपर, नहीं तो जीरो वाला हिसाब हो जाएगा. यू स्टक ऑन Right. वन क्वेश्चन एंड यू आर डन. राइट. तो 4 मिनट You have पूरे to keep, सेक्शन के लिए. sir, you have to keep an eye on the clock because exam में you forget about it. ट्रू ट्रू. मैं इनको एक और तरीका बोलता हूँ, शायद तुम्हारे टाइम पे अगर तुम्हें याद हो. यहाँ तो पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है? 20 मिनट और 30 मिनट. DIL में तो जाना कुछ तो लेके आना है बाहर, ठीक है? पेपर तो मुश्किल होने वाला है इस बार. तो मैं इनको यही बोलता हूँ कि अंदर घुसो और जाओ. पहले 20 मिनट के अंदर पहले 2 सेट में से देखो कौन सा इजी है, ठीक है? पहले 2 में से, 1 2 में से और 3 4 में से. और फर्स्ट ओवर में तुम्हें सबसे इजी सेट मिल जाएगा इफ यू प्रिपेयर्ड इनफ. फर्स्ट 20 मिनट में एक इजी सेट ढूंढो. इट कुड बी इन द थर्ड एंड फोर्थ सेट. फर्स्ट फिनिश दो स्टीव, फिनिश इट ऑफ, और अगले 2 में से एक ढूंढो. 2 सेट पिछली बार पूरे ठीक करने पे 99 टचिंग था, अगर तुम यहाँ पहुंच पाते हो. और पिछले 2 साल में ऐसा हो रहा है. टॉपर जनता, वहां बैठ के तुम तीसरा सेट भी सॉल्व कर सकते हो. और पहले सबसे इजी निकालना, तो वही खेल, वही सारा खेल है. अविनाश, तेरा क्या सीन है? Sir, I completely agree with what you just said because that applied to me also. In my opinion, sir, it's up to a person what level of risk they want to take in the area, because it's all about the accuracy. In my case, I had a very unique approach. I was considering VRC as my strong section, so I thought in DILR I should not screw up. Wo zero wala scene, I didn't want to happen. So I picked questions very carefully. Anything I had doubt, I did not attempt. I attempted only 9 questions, which is actually not so great. But all 9 were correct. My accuracy was 100%. So that's how I managed to score well. क्या था तेरा DLR So परसेंट? 9 पे परसेंटाइल याद है तेरे को? I don't remember exact percentile, but 98 point something. 98 point something. Okay, good. Yeah. So I got with just 9 questions, but I picked those 9 questions. Didn't want to take risks. So that was my approach. So it's up to a person. Somebody wants to be adventurous, they can, but be careful because DLR can go anyway. क्या Just बात keep a है. track of on the time. That's all. Yes. That's a very Really good. important. भाई हम इनकी थोड़ी आगे भी जाके बात डिस्कस करेंगे. लाइफ एट IIM कैलकाटा, IIM अहमदाबाद. ये लोग मुझे पूछ रहे थे मोटिवेशन ऑफ द डे करो. वो तो आज तुम बताओगे. हाँ, तुम्हारा भी गुरु दक्षिणा देने का टाइम आ गया. तो अब बताइए क्वांट सेक्शन. क्वांट में किसका हाईएस्ट है यहाँ पे? 99.72 था. 9172. अविनाश? So mine was low, 92, around 92. अराउंड Yes, 92 करके yes, भी yes. ओवरऑल तेरा 9173. Yes, because बाड़ा है भाई. 99.98 around. अच्छा, उसमें 99 बना. अच्छा, by the way, pro tip, if you do one section, take it to the moon, your overall score goes up, right? And there is no, Yes, sir, very बोल much. बोल. I wanted to talk about that actually because go ahead. I planned this as in my approach by seeing some of the people you might also be aware the people who score 100 percentile repeatedly every year.
So while I was taking my mocks, I compared my scores with some of these people, and I found that I was scoring better in VARC and DILR than some of these people who are scoring 100%. I could not believe it. And in actual CAT also the same thing happened. I actually did go and check after my CAT. Yeah. So if you are really strong in one section, it can really pull your score up. This is my story is real. My quant score was not even 92. I think it was 91.66. Wow. 91.66, but still my overall score is 99.73 because of that VRC score, and I did not screw up in DILR. So that sometimes happens. Again, next to my room, there is a guy who scored 99.99 in one of the sections last year, but he did not clear the cutoff in DILR. Oh So that also God. can happen. That So also. yeah, so that should not happen. If you clear the cutoffs and if you score above 90, and if you have one strong section, you can have a very amazing, very amazing. बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे एडमिट कार्ड ढूंढ रहे हैं, बाय द वे आज 7 नवंबर एडमिट कार्ड आने वाला है, तो एक लड़की स्पैम कर दी अभी चैट के अंदर, एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड। तो कोई आदित्य लिखता है, क्या करेगा भाई अभी से एडमिट कार्ड डाउनलोड करके। अभी 20 दिन बाकी है। चलो बढ़िया, लेट्स टॉक अबाउट क्वांट स्ट्रेटजी। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। आदित्य साहू रियल आईडी से अब आदित्य साहू रियल आईडी से आओ। अच्छा, क्या बात है। गुड गुड गुड, चलिए भाई बताइए। तो क्वांट का आई वाज ऑल लाइक एक्यूरेसी ओवर स्पीड, दैट इज सॉर्ट ऑफ माय मंत्रा, क्योंकि आई फेल्ट कि द क्वेश्चंस आर रियली 10th ग्रेड लेवल क्वेश्चंस, तो ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है कि हम कर लेंगे, बट थिंग इज सही करना है। तो क्योंकि दैट इज समथिंग यू कैन बी श्योर अबाउट, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड नॉट अ लॉट ऑफ ट्रैप्स इन्वॉल्व, तो यू जस्ट हैव टू मैन्यूवर केयरफुली एंड जितना हो सके सही से करना है। डोंट टारगेट अ लॉट, ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस से 22 में से कुछ 20 करके आ जाएंगे, नहीं, तुम 14 भी करो। दैट्स व्हाट आई डिड, मैंने 14 क्वेश्चंस करे, मेरे सारे सही थे। तो उससे मेरे 99.72 आ गया था, which is sort of dragged my score as well. 14 question, right? Yeah, very good. Sir, another tip would be that I think arithmetic should be the focus. Like if you have the opportunity to practice a few topics, definitely do arithmetic, because first of all you need enough practice के साथ you have to develop the ability to see कि ये question tackle करना है कि नहीं करना. That is the most important skill that Aditya Sahu just mentioned. कि he just attempted 14 because he had practiced that much कि he could recognize those 14 out of the 22 questions. So that's also very important. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तुषार, तेरा क्या सीन है भाई, क्या बताना चाहते हैं क्वांट के लिए? सर, तो मैंने तो आपका स्ट्रेटेजी यूज किया था, 10 मिनट के 4 स्लॉट्स बना दिए थे, एंड उसके हिसाब से 6 क्वेश्चंस कर रहा था। जहाँ इनको दोबारा समझा दे, आधे लोगों को भी पता नहीं, मैंने भी वो बताते रहता हूँ, इनके दिमाग से वो उड़ जाता है। बताओ। तो राउंड रॉबिन स्ट्रेटेजी सर ने बोला था, बेसिकली व्हाट सर सेड वाज 40 मिनट्स मिलेगा, ये 40 मिनट्स को 10 मिनट्स के 4 स्लॉट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट 10 मिनट्स, नेक्स्ट 10 मिनट्स, उसके बाद के बाकी 10 मिनट्स, एंड फर्स्ट 10 मिनट्स में फर्स्ट 6 क्वेश्चन से मैं गो थ्रू करूंगा, एंड उसमें से जो मुझे लग रहा है सॉल्वेबल है वो सॉल्व करते करते आगे बढ़ूंगा। फर्स्ट 10 मिनट में वही 6 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एंड नेक्स्ट 10 मिनट में नेक्स्ट 6 को उठाऊंगा मैं, एंड उस हिसाब से मैं जाता हूँ। तो लास्ट में मेरे पास सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बचता है, तो अगर मुझे लगता है कि कहीं तो और ज्यादा टाइम मैं दे सकता हूँ, तो लास्ट में I get 2 to 3 minutes to solve that one extra question बीच में anywhere in the paper. So that is the strategy with which I went ahead in the paper. But थोड़ा सा मेरा इसमें कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था क्वांट में, तो I did not score that well. 98.5 के आसपास आया, बट वहां पे ही थोड़ा इशू हो गया। पहुंच गया ना IIM कैलकाटा, जान लेगा अभी तू। पहुंच तो गया, तो नौकरी लग चुकी है तेरी। सर एक ही तो सर कॉल था अभी। तेरा एक ही कॉल था क्या? सर ब्लैकी ने किसी ने कॉल ही नहीं किया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो भाई ऑल द फ्रेशर्स एंड जेम्स ऑन द हाउस, एंड ये तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, पर ये छोड़ के पढ़ाई मत छोड़ देना, और ऐसा हो भी सकता है कि एक ही कॉल और कन्वर्ट भी हो और अंदर भी बैठे हो और नौकरी भी लग जाए। ठीक है भाई? ठीक है, लवली। चलो लेट्स ट्रेडिंग टॉक। में बोल। सर फनी स्टोरी, मुझे फाइनेंस का भी एक ही शॉर्टलिस्ट था, बाकी इंग्लिश शॉर्टलिस्ट नहीं, और वही कन्वर्ट होके बैठा है। अभी सारी बातें मत बता इनको, पढ़ाई छोड़ देंगे ये लोग। एक ही मिलता है, हमारा नहीं हुआ तो क्या हो पाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो फाइनेंस मार्केटिंग सारे लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। ग्रेट यार। हाँ एडी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग अबाउट क्वांट्स, और अविनाश? No, sir, nothing specific, just that accuracy and be really careful, because quants was the last section and I screwed up 2 questions by not reading the options correctly. There was a question, the answer was -9/2. I marked it as 9/2.
So such things can cost you a lot of percentile and marks. So be very careful. Carry that energy of CAT through the very end. So that is the most challenging aspect of quants, according to me. Other than that, while preparing, please don't miss any areas. Like I have seen some people, they're like, in this area of geography, it is too much of a syllabus. I will not prepare that. Please don't do anything like that. Try to complete the Geography नहीं, syllabus. ज्योमेट्री. Did I say geography? I mean, हाँ, obviously I meant geography. ये होता है यूपीएससी करने का फायदा. Actually, this is exactly the type of mistake I am telling people to avoid. Now I screwed up. So the same thing you should not make. Be very careful and accurate and precise. बहुत ही बढ़िया भाई. 500 लोग तुम्हें देख रहे हैं, सब लोग सेलिब्रिटी हो चुके हो भाई. पीपल आर वाचिंग अस. अच्छा भाई, अगर तुम्हारे दिमाग में किसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस भी है ना, तो आप लोग स्पेसिफिकली इनको पूछ सकते हो. आई रीड आउट योर क्वेश्चंस. वी लाइव फॉर 5 मिनट जुड़े रहिएगा, पर उसके वाले स्ट्रीम को लाइक पक्का करेगा. और दूसरी बात, एंड तुषार इज द फ्रेशर, नो एनआईटी नो आईआईटी में बार बार बोलता रहता हूँ. तुषार देखो डीमीन करने के लिए, ये बोलने के लिए कि भाई तू रोल मॉडल है सबका. ठीक है अविनाश. हाँ अविनाश गैप ईयर. अरे मैंने कुछ नहीं किया, तू लड़का ही स्टड है भाई. और क्या 21 साल का हो गया कि 22 साल का अभी? 22 का हुआ जस्ट अभी. जस्ट हुआ. अरे क्या बात है. और अविनाश साहब के गैप ईयर है. अविनाश कितना गैप ईयर? 1 year gap years. 1 year गैप. बहुत बढ़िया. यूपीएससी प्रेप छोड़ के भैया आए. और क्या और आईडी तेरा क्या है? नॉर्मल प्रोफाइल है क्या? मेरा नॉर्मल. हाँ नॉर्मल मतलब फ्रेशर हूँ. डबल मैसेज कर रहा है. हाँ नॉर्मल तो नहीं है. नॉर्मल तो नहीं है. बहुत बढ़िया. Scientist है sir, देवराज scientist है. साइंटिस्ट. ओ ऑन पेपर साइंटिस्ट. काइंड ऑफ. ओह माय गॉड. इस बार का पेपर सेटर भी साइंटिस्ट है बाय द वे. हाँ आई एम लखनऊ का पेपर सेटर है. सर मेरे को एक चीज याद आ रहा था. आप बोल रहे थे एक टाइम पे लाइव स्ट्रीम में जब मैं प्रिपेयर करता था, मैं देखता था पॉटी प्रोफाइल बोलते थे, राइट? कि और आई फॉरगेटिंग इट. हाँ सो दैट वो मैं हूँ सर. मेरा एक्चुअली वो परफेक्ट फिट होता है सर, पॉटी प्रोफाइल. कुछ भी एसपीजेन प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज पहुंच गया और बॉडी प्रोफाइल बोल रहा है. नहीं बट वो तो कैट और ये सब मिला के, वर्क एक्सपीरियंस सब मिला के, बट 10th 12th और ग्रेड देखोगे तो इवन आई डिड नॉट गेट एनी ब्लैकी कॉल्स. सो लाइक जेम होने का ये एक तो ये है ना सर. अच्छा एक कॉल मुझे सर नॉन इंजीनियर्स एडवांटेज तो मिला है. नॉन जरूरत तो नहीं थी तुझे. बहुत ही बढ़िया. जाता ही अंदर. बहुत ही बढ़िया. और सर देवप्रिया मिस कर रहे हैं आपको. कौन मिस कर रहा है? देवप्रिया मिस कर रहे हैं आपको. देवप्रिया कहाँ है? बुला ले उसको यार. है अभी है. बुला लो. बुला बुला बुला. ठीक अच्छा ठीक. नहीं तो लिंक भेज दे उसको, वो ज्वाइन कर ले. देवप्रिया इज 99.9 इन एफएमएस कॉलेज. अरे स्टड आदमी वो बंदा गॉड है. एफएमएस नहीं अहमदाबाद आया. अब मुझे पता है. हमारी बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई थी कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें. एंड आफ्टर यूट्यूब लाइव ही केम ऑन द चैनल. गुड. लिंक भेज दे. आजा भाई देवप्रिया भाई, बड़े बड़े लोग हैं देखो. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. चलो भाई बढ़िया है. चलो जब तक देव ज्वाइन करता है, लास्ट फ्यू थिंग्स और बताइए यार. देव मित्रा ऑन द डे ऑफ कैट प्रिपरेशन क्या बताना चाहोगे? वन स्मॉल टिप. 99.27 देवराज मित्रा ऑन द डे ऑफ कैट. कुछ वेंट रॉन्ग, कुछ वेंट राइट, फटाफट. सर ऑन द डे ऑफ द एग्जाम कि एक चीज जो कि वी नेवर प्रिपेयर फॉर इज द टायर्डनेस. कि यू हैव टू वेट फॉर 3 hours ऑलमोस्ट बिफोर यू सी द पेपर. तो कभी कभी मॉक्स एट अ टाइम you can maybe incorporate this into your routine where you are not doing anything. 3 hours of just sitting on a chair or somewhere waiting. That will really help you. That will really give you a test ki real true mock that would be. So this is just one small tip which I realized later. The bad job, do nothing. Yeah, because 3 hours of just waiting, it really messes up. It makes you tired. When you see the paper, you're not really 100% ready. It takes you some time to get back to speed. So yeah, so this is something which I observed in my attempt. ये तो अविनाश को टिप देनी चाहिए. एनडीए कैडेट ये है हमारा वैसे भाई तो. Yes sir, actually that's a very good point because देखा मुझे पता है इसके दिमाग में यही चल रही है. आर्मी वाले ऐसे होते हैं. हाँ बता. नहीं sir, because this happens to people who practice with sectional mocks. Like quant prepare करता है and then they never sat for a 3-hour entire exam. So 3 hour or 2 hour, whichever format your exam is, I think the tiredness comes from the extent of your concentration and all that. So you will exhaust your mental energy and try to keep it till the end. So otherwise, what I mentioned about the other guy will happen. You will do really good in one section, but then by the time you are exhausted and you will screw up one another.
ये that बहुत should not बहुत happen. बहुत बढ़िया बात है। I'll just add on one small thing, एक होता है हैंगओवर इफेक्ट। तो भाई अगर तेरा वर्बल अच्छा नहीं गया और वो आगे जाके डीएलआर में इफेक्ट करता है, और डीएलआर अच्छा नहीं गया तो फिर आगे जाके कॉन में इफेक्ट करता है। और वो हुआ है, किसका हुआ? 92% अविनाश का हुआ। पहले 2 सेक्शन फाड़ दिए एंड में जाके। तो इट्स अ टेस्ट ऑफ योर माइंड एज वेल एंड टेस्ट ऑफ योर ब्रेन एज वेल। ठीक है, अभी एक सरप्राइज बंदा ज्वाइन कर रहा है, बड़े मजे करने वाले हैं हम थोड़ी देर उसके साथ भी। ठीक है, गुड। हाँ तुषार, दी डे स्ट्रेटजी कुछ बताना चाहोगे? अच्छा, डी स्ट्रेटेजी, पहले तो रेड बुल लेके जाओ या कॉफी लेके जाओ, आपका ये चीज मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ बेसिकली। एंड द सेकेंड थिंग इज, आपने जैसे हैंगओवर इफेक्ट का बोला, मुझे लगा था मेरा वर्बल बहुत अच्छा जाने वाला है, बट वो सेकंड पे वैसा नहीं गया। आई वॉज लाइक वर्बल विल गो वेरी वेल, डीआईएलआर में कुछ भी करके नहीं, या पार रखना है, कौन बाकी संभाल लेगा। एंड एग्जाम में एक्चुअली हुआ पूरा उल्टा। वर्बल डिड नॉट गो एज आई एक्सपेक्टेड, एज वेल एज आई एक्सपेक्टेड। डीआईएलआर मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो 2.5-3 सेट बन गया। एंड फिर क्वांट में जितना हुआ करके आ गए। तो वहां पे अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन ऑन द डी डे। यू हैव टू बी अडेप्टेबल इनफ टू थिंक। तो वहां पे सोचना, दिमाग बंद करके रिजिड भी नहीं रहना है, और ऐसा भी नहीं रहना है कि कोई स्ट्रेटेजी के साथ नहीं जाना। अभी लास्ट में प्रैक्टिस और व्हाट यू कैन डू फॉर द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, हाउ विल यू मैनेज योर रिस्क। So that is the biggest thing that I can advise on. बहुत ही बढ़िया। और एक और भाई, तेरी मूछ कहाँ गई? वेलकम टू IIM अहमदाबाद। मुंह छुड़ा दी सर प्लेसमेंट के लिए। Oh God, oh God. People who don't know, there's a story behind most of these people who have met in my life, and we have met multiple times. तो देव और मैं एफएमएस छोड़ के तो अहमदाबाद आ गया ना, धोखा दिया तूने। सर एफएमएस गया नहीं था इंटरव्यू देने में। अरे तू एफएमएस की कॉल में मिला वही था ना। मेरे को। क्या कॉल पे आया था ना, आपसे मिलने आया था मैं। अच्छा, वैसे मिलने आया। वैसे मिलने आया। ये देखो चालाक लोग, इंटरव्यू देने नहीं गए, एफएमएस की कॉल दे, वो बड़े लोग हैं। देव बता दे, थोड़ा ज्ञान बांट दे यार, बस एंड ईयर सेशन के अंदर। एंड टचिंग 500 प्लस पीपल आर लिस्टिंग टू अस। भाई कैट 99.99 भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देव, एक पार्टिंग थॉट्स यार। थोड़ा मतलब मॉक्स देने आप कम कर सकते हैं, आई गेस। ज्यादा वेरिएशन थोड़ा कॉन्फिडेंस ला सकता है। उल्टा ही प्रीवियस बोल, ईयर इन्होंने कुछ भी नहीं दिया हो अभी तो। प्रीवियस ईयर दे लो अगर अगर हाँ हाँ ठीक है, कोई आया इसके कमरे के अंदर। ठीक है, हाँ ठीक है डन। तो बाय द वे, तब तक वो आगे ज्ञान देता है। सब लोग अपने अपने हॉस्टल से हैं, तो मैनिफेस्टेशन कर लो। अगले साल कौन से हॉस्टल से अपन बात कर रहे होंगे, ठीक है? फिर आईडी की तरह पिंग करना, अरे सर देव हाय बोल रहा हूँ, अरे देव को लिंक भेज। तो मेरा तो बड़े एनेक्डोट था कैट वाले दिन का। हाँ तो तभी मैं हॉस्टल में ही रहता था, फ्रेशर। तो दैट वाज द डे जब अर्जेंटीना वर्सेस मेक्सिको का मैच था। एंड यू नो हाउ क्रेजी हॉस्टल्स आर ड्यूरिंग वर्ल्ड कप मैचेस। तो मैं बहुत ट्राई करा टाइम से सोऊंगा, एंड देन नहीं हो पाया। इट्स लाइक पीपल शाउटिंग एवरीवेयर। फिर मैं आधी रात को उठ गया, मैं बोला कि अब सोना तो है नहीं, नीचे बैठ के मैच देखा पूरा। then went for the और exam. फिर मेरा मॉर्निंग स्लॉट था ऊपर से, एंड देन आई जस्ट हैड फ्यू आवर्स ऑफ स्लीप। फिर मैं सोचा कि चलो जो भी है, जस्ट काम माई सेल्फ डाउन, हैड अ कपल ऑफ कप्स ऑफ कॉफी। मेरा एक पेट कैट था। Pet cat. तो Okay. तो वही मैं अपने बिल्ले के साथ खेल रहा था थोड़ा ऐसे, जस्ट काउंट माई सेल्फ डाउन, काउंट माई नर्व्स डाउन। क्योंकि मैं देखा एग्जाम हॉल पे देयर आर लॉट ऑफ पीपल रैम्बलिंग थ्रू द पेजेस। पता नहीं ऐसे क्या तुम पढ़ लिए, एंड देन एग्जाम के लाइक समथिंग लाइक कैट वाले एग्जाम के सुबह ऐसा क्या ही पढ़ लोगे जिससे तुम बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। नहीं, तो बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू काम योर नर्व्स डाउन, सिट देयर, रिलैक्स, थिंक अबाउट व्हाट्स गोना हैपन लेटर ऑन। मतलब नॉट इन अ ऐसा टेंस होके नहीं, बट इट्स लाइक थिंक अबाउट द पॉजिटिव रिजल्ट्स कि क्या क्या हो सकता है। एंड देन वही, एज तुषार मेंशन्ड, आई थिंक मैंने भी स्टिंग या फिर मॉन्स्टर कुछ तो लेके गया था, एंड देन या दैट वाज इट। हाँ बात है क्या भाई, ये रेड बुल वर्क्स है। मैं बताने वाला था इनको बाद में, तुमने अभी बता दिया। बट चलो तुषार, तू मेरे स्ट्रेटजी तो बता दे, मेरे लास्ट दिन वीडियो में क्या बोला। ठीक है, डन डन। हाँ देव, अभी आप बात कर सकते हैं, आपकी डिस्टरबेंस अगर कम होगी हो क्लास रूम में। हाँ सर, मोस्ट प्रोबेबली, होपफुली दोस्त नहीं आएंगे तंग करने के लिए, बट यार ट्राई गिविंग द प्रीवियस इयर्स इफ यू कैन। उससे थोड़ा एक्चुअल एग्जाम का आइडिया लगता है, सो इट्स गुड प्रैक्टिस ड्यूरिंग द एंड डेज। थोड़ा रिवाइज कर लो इंपॉर्टेंट क्वांट फॉर्मूलाज, एंड वही आराम से जाना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। कोशिश करना, मतलब बोलने से नहीं होता यूजुअली, बट कोशिश करना नॉट टू बी वेरी टेंस्ड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। बाकी अच्छा जाएगा, ऑल द बेस्ट। क्या बात है। अच्छा लास्ट भाई, जीडीपी वीडीपी संभाल लेंगे? हाँ, वो टेंशन जीडीपीएस, मतलब वो कैट एग्जाम के बाद के अगले दिन की चिंता है वो अभी। तुम लोग आओगे नाउ, योर कैट किंग इल्यूमिना, यू गाइस हैव यूज्ड द डैशबोर्ड, नाउ यू टू गिव देम बैक एज वेल।
देव अभी तेरी कॉल आई थी तो कन्वर्ट भी की थी तूने, अभी जाके इनको हेल्प करना है अगले साल। अनम्यूट करके तो बोल। हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, ग्रेट यार, दिस इज सो अमेजिंग। वन पार्टिंग थॉट्स टू ऑल दिस ग्रेट पीपल। एक थोड़ा लाइफ बता दो यार, लाइफ बढ़िया हो गई है कि नहीं? मतलब बाय द वे देव अपना एमबीए खत्म करने वाला है, ये भी एसपीजे में इंटर्नशिप्स टुवर्ड्स द एंड होती है, और ये अभी सेकंड ईयर खत्म हो रहा है, और तुषार अभी 6 महीने खत्म होने वाले हैं, 6 महीने के आसपास होने वाले होंगे। और सेम विद एडी, सेम विद अविनाश एट IIM कैलकटा, सब लोग अपने अपने कैंपस से ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है यार, ठीक है, जब ये लोग अंदर जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल द प्लसेस एंड माइनसेस, ये वो एक अलग ही थ्रिल चलता है लाइफ का। यू स्लीप लेस, देयर आर पॉलिटिक्स, देयर इज कंपटीशन बिकॉज यूर कट थ्रोट, वो ऑल सेट एंड डन यार। बट ये जो जिंदगी है ना, मतलब इफ यू आस्क मी, आई वुड लव टू लिव माई दोज 2 years ऑफ MBA लाइफ अगेन। But sir, there is also a lot of learning that happens in these things, in these situations. So that you realize later when probably more of us will go and work. So you realize ki this actually helps. Ki the constant assignments will help you, maintain that ki in the future you'll be having that kind of a workload. When you go to the field industry, then you realize ki people have a lot of workload. And managing tasks and managing your own time, it's a skill which you develop in B school. True So, that. yeah. I have got, मेरा भी रिस्पेक्ट फॉर द बी स्कूल स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड। लाइक हम लोग तो मतलब सब करते थे, टाइम पास भी करते, पढ़ाई भी करते, पढ़ाई तो खूब पढ़ाई, प्लेसमेंट के टाइम पे तो और भी पढ़ाई। बट ऑल सडन डन एक रिस्पेक्ट बढ़ गई व्हेन यू सी द नॉन MBA पीपल आल्सो इन दिस वर्ल्ड, एंड यू नो हु आर, हाउ स्टूपिड इट मे साउंड, लाइक पीपल डोंट अंडरस्टैंड डेडलाइंस, you know, 11:59 Yep. 59 क्या होता है, you know, IIM अहमदाबाद में जो 1:45 पे टेस्ट अनाउंस करते हैं, तो भाई वो क्या होता है उसका मतलब, एक जब वो नोटिस बोर्ड पे आगे लगाता है कि भाई यार टेस्ट है या नहीं है, वो सब छोटी छोटी बातें यार, पीपल डोंट नो, दिस इज लाइक अ बेसिक वर्क एथिक फॉर एन MBA, you know. And like Tushar is sitting down here, he doesn't know that tomorrow 6 a.m. in the morning he has to go to classroom, or maybe, you know, Avinash is going to have a company coming at 4 a.m. in the morning, and Avinash cannot say कि सर सर मैं नहीं आ रहा हूँ, you know, या पेट खराब है टाइप्स, जो 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 एक नॉन MBA मुझे ज्ञान देता है। तो मेरा खुद का एक रिस्पेक्ट बढ़ चुका है। बट नेवरदलेस, पार्टिंग थॉट्स टू ऑल दिस ग्रेट पीपल फ्रॉम 20 days टू कैट बॉयज एंड गर्ल्स, लाइफ का कुछ ज्ञान देते देव, इनको बोल दे लाइफ अमेजिंग है कि नहीं है, सच्ची सच्ची बता दे यार। Sir, absolutely. Matlab, it will change your life. The past 1 year has been the most transformational journey of my life as a person. Also, I've been through so many things. B school throws you so many things so fast. It's like a year has gone by and I don't even realize it. It's like yesterday I was preparing for CAT. So it's like things are going really fast, and you're gonna love the life after it. Like it's just 20 days. सुपर यार। तुषार, तो हमारा लाइफ तो सर टर्म वन स्टार्टेड वी हैड एवरीथिंग टुगेदर। हम लोग का प्लेसमेंट भी फर्स्ट, वी वेंट फर्स्ट दिस ईयर इन द प्लेसमेंट्स, and everything that you do in the next 20 days will be worth it. From my room I can see one of the lakes, one of the 7 lakes of the campus. I can see directly from my room. And secondly, और एक चीज, अभी संडे को सुबह मैं 9 बजे सो रहा हूँ, तो the entire night पूरा पार्टी था। Entire night, people did not sleep. We saw the sunrise from the jetty, the famous IIM Calcutta jetty, and then we slept. So that is the kind of life you will get if you can crack this. And placements and other things don't even matter once you get inside. You will do it. You will have everything on at your disposal to make sure that you get the best of the opportunity. So that is no brainer. तो करो मेहनत यार, अभी नहीं तो कब? that's amazing. Adi, So IIM Ahmedabad बहुतों का dream school है, and then obviously it's a status upgrade, but more than anything else, it brings in a lot of responsibilities as well. You have to carry the legacy, but उसके लिए you'll have to get here first, and then that journey is amazing more than anything else. You get to start at a point, and then you go through all those phases, all those ups and downs. जब लग रहा है कि होगा नहीं होगा, and then you stop believing in yourself, and then you look at other people who have come up from worse situations to perform so well. So वो journey just transforms you for forever. And then once you step in, then obviously the life changes. You get a status upgrade. You get to enjoy a lot of other perks as well. But then getting to this point, it's been amazing. क्या बात है, क्या तुम्हारा पूरा IIM अहमदाबाद ज्वाइन किया हुआ है, रुद्रनील रॉय, और कौन है, हर्ष मिश्रा, पता नहीं कौन कौन है। ठीक है, एनीवे, अविनाश, पार्टिंग थॉट्स। Sir, just like what Tushar said, IIM Calcutta has the best parties. Actually, in that area, we are IIM chill. Ahmedabad and SPJIMR, they cannot touch us.
So that is there. But I will agree. I will agree to that. I will Yes, agree to so- that. I will 100% agree to that. I was giving an example of beer, and Varun Nagraj sir, हमारे dean, corrected me. Ke, yeah, sorry to correct you, but we don't have beer. I was like, sir, I'm giving an example. Like, you know, I'm a guy who like to have chill out. Anyway, this is long back, but yeah, I agree to that. Yes. I've spent 2 days in Jokha. Matlab, holy fuck, matlab, Yes. the best time of my life. No doubt in that. No doubt in that. Sir, one more thing I would like to add, just while we were talking about the D-Day, I had a very interesting anecdote because I had to convince the person that I am the same person in the photos. Okay, and you will understand it when you see my test day photo and upload photo. Shall I put it in the group, sir? You can show these people. Dikha, And dikha. that I think will show a clear picture of me coming from that to here. That test day photo of mine shows me in my post UPSC avatar, and this is me right now sitting in IIM cap. WhatsApp if कर दे WhatsApp. see, I have sent it in a WhatsApp. Debraj is trying to show. Yeah, but it's like blurring out. अरे तूने कहा It's group में blurring out. डाल Yes, yes, Oh yes, 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 yes. Tushar. See, It's visible. this कौन is सा why I group? had. This is why I had difficulty convincing that I am the same person in the photos. Whoa. देख लो भाई मैं So, करता हूँ स्क्रीन शेयर This देखो is भाई me. तो अपनी जो मुझे पूछते हैं ना एडमिट कार्ड की फोटो लगानी है कि नहीं लगानी है ये देख लो भाई ठीक है तो so this is the transformation that can happen after CAT. So I don't have to say more. so how you convince him that's another another discussion how do you convince him on the day of CAT It was not easy. It took some time actually. It really took. So yeah. so amazing all right this is so amazing any parting thoughts Dev 99.9 and go ahead लाइफ काफी अच्छी है मेहनत कर लो आ जाओ थिंग्स स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग आउट कि क्या करना है एंड ऑल दैट गुड अपॉर्चुनिटीज ग्रेट एवेन्यूज एंड या इट्स रियली नाइस तो मेहनत कर लो आखिरी दिनों में सही जगह पहुंच जाओगे बहुत ही बढ़िया great यार and you guys have to come back again for the GDPI and help them up to convert their calls promise करो मैं pledge करवा लूंगा नहीं तुमसे इनका कॉल आने वाली है अभी वो देखिए आई प्लेज I pledge I pledge. यहाँ पे आके रोना बट वो आंसू खुशी के होंगे ओए होए क्या बात है very nice यार amazing meeting you guys I think one of the best panels last I had with the day for yesterday with Mithil in the gang तुषार याद है मिथिल आया था वहां पे it हाँ was so सर, उसका कॉल आ गया था उसके बाद. फिर कॉल आया था क्या yeah it was so much of fun and boys and girls again thank you Dev thank you Avinash thank you Adi Debraj Cat King was part of your small journey somewhere during maybe your mocks preparation or a GDPI Yeah. wherever and It was. thank you so much for all the kind words and thank you so much for coming back again to the channel on request and keep the Cat King flag high or keep the now IIM Ahmedabad, IIM Calcutta and SPJain Bombay flag high and keep helping people here and my advice to you for the next 1 year people who are still there just transform yourself chill karo for sure whatever qualities you don't have in you write them down properly और देखो मेरी और I think देव की भी बात हुई थी रात को एक बार when he was thinking about joining Ahmedabad करें आगे because he was a fresher and come out as a different person for sure apart from chill and all these things वो तो है ही है and the network which you have right now all your batchmates are going to be some deans some directors some CXOs of top companies so your friends your enemies could be the guy whom you'll be working with after 10 years from now and so ये जो network है वो बहुत amazing है leaving the cutthroat in B school there are always some good people right and there are always some kaminas of the world right maybe you could be one of those kaminas or you could be one good people but have a strong gang of those 10 friends घोड़े जो आपके साथ तुम smart हो यार करोगे all right thank you so much joining in boys and girls all the best to everyone keep killing and keep working hard and people who are listening to this on the other side of the channel do it on the like button और नीचे comment करो भाई that you're going to be the next Dev or next Tushar or next Avinash from Cat King family or my YouTube family wherever you guys are keep inspiring each other और 20 दिन अभी आग लगा दो बैठ के इससे बड़ी मोटिवेशन नहीं हो सकती तब टॉपर्स अपने हॉस्टल से आके आपको मोटिवेट करें थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन do it on the like button boys and girls take care bye bye thank you Best of luck. Best of luck.